पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से आखिर कब बाज आएगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को खुद से ज़्यादा हिंदुस्तान की फिक्र है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान न जाने क्यों इस बात को बार बार भूल जाते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान को हिंदुस्तान के मामले में दखल अंदाजी करने का कोई हक हासिल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान है कि वो अपनी गीदड़ भभकियों से बाज नहीं आता। Pakistan suffered 10 years of the worst kind of terrorism where we lost 70,000 people. A country which relies on tourism can never progress if there is terrorism. Can't have investment if there is terrorism, because that's what happened to Pakistan. In those 10 years, tourism dried up and hardly any investment came into Pakistan because of the threat of terrorism. अपने मुल्क में दहशतगर्दी को मानने वाले और कबूल करने वाले पाकिस्तान को कश्मीर की फिक्र सता रही है। अपने मुल्क में 70,000 लोगों की दहशतगर्दी से कुर्बानी कबूल करने वाले इमरान खान कश्मीर राग अलापते नहीं थकते, और इस बार तो सिर्फ राग नहीं अलापा बल्कि सीधे तौर पर न्यूक्लियर हथियारों का भी जिक्र कर डाला। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गीदड़ भभकी देने से बाज ही नहीं आते। अब तक उनके वजीर न्यूक्लियर बम वाली धमकी देते थे, लेकिन अब इमरान खान भी हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बम की धौंस देते नजर आए। एक बार फिर एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कश्मीर का राग अलापते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में कश्मीर का मुद्दा हल हो जाता है तो न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। I'm completely against nuclear arms. I always have been. We've had 3 wars against India. And ever since we've had nuclear deterrent, we have had no war between the two countries. We have border skirmishes, but we've never faced war. The moment there's a settlement on Kashmir, I believe the two neighbors will live as civilized people. We will not need to have these nuclear deterrents. 2017 में हिंदुस्तान के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि ये पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो जाना चाहिए कि कौन दहशतगर्द है और कौन नहीं, बल्कि दहशतगर्दी की तारीफ भी वाज़ेह हो जानी चाहिए। दुनिया के सामने नक्शा क्लियर होना चाहिए, कौन टेररिस्ट है, कौन मानवतावादी है, कि एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में तय हो जाना चाहिए कि आतंकवाद आखिर है क्या। और ये परिभाषा न होने के कारण एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म चल रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया कबूल कर चुकी है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 16 जुलाई 2017 के बयान को सुनिए। And we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. अब आपको एक माह बाद डोनाल्ड ट्रंप का 24 अगस्त 2017 वाला बयान सुनवाते हैं, जिसमें ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया था कि हम अब चुप नहीं रह सकते, चाहे बात तालिबान की हो या फिर पाकिस्तान की। We are not nation building again. We are killing terrorists. The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear. We must stop the resurgence of safe havens that enable terrorists to threaten America. And we must prevent nuclear weapons and materials from coming into the hands of terrorists. 8 साल कबल 2 मई 2011 को अमरीकी फौज के खुसूसी दस्ते ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद शहर में ओसामा बिन लादेन और उनके करीबी साथी अबू अहमद अल-कुवैती और 3 दीगर लोगों को पाकिस्तान में घुस कर मारा था। लेकिन इस खबर की भनक न पाकिस्तानी हुकूमत को लगने दी थी और न ही पाकिस्तानी फौज को। आसपास के इलाके खाली करवाए, लेकिन हुकूमत को भनक तक नहीं लगी, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका को शक था कि अगर इस बात की भनक पाकिस्तान इंतजामिया को लगी तो इत्तला ओसामा बिन लादेन तक पहुंच जाएगी।
At my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. Last August, after years of painstaking work by our intelligence community, I was briefed on a possible lead to bin Laden. It was far from certain, and it took many months to run this thread to ground. I met repeatedly with my national security team as we developed more information about the possibility that we had located bin Laden hiding within a compound deep inside Pakistan. इतना ही नहीं, आज भी पाकिस्तान के दहशतगर्द रवैये पर हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल में बड़ा हमला किया है और सख्त फटकार लगाते हुए कहा है कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान पेंशन देता है। हिंदुस्तानी सफीर ने वाज़ेह कर दिया कि अब पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने का वक्त आ गया है। The scourge of terrorism is the gravest violation of human rights and must be dealt with in strongest terms in all its forms and manifestations. Pakistan, as its state policy, continues to provide pensions to dreaded and listed terrorists and hosts them on its territory. It is high time that Pakistan is held accountable for aiding and abetting terrorism. कुल मिलाकर हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी करने वाले पाकिस्तान की हालत खस्ता है। मुल्क में खाने और रोजगार का बहरान गहराता नजर आ रहा है। आलमी बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2020 में 4.4% से लेकर 5.4% तक गरीबी बढ़ी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी सलाम।